So starting with internal data science Mtech-IT 2K23 fifth sem internal 2. First section comes with data cleaning. So first section comprises of fill in the blanks. Question number 1. In Bayes' theorem, PA by B stands for. So solution to this would be in Bayes' theorem, PA by B stands for B PA slash B. Then comes the second question. In second question, it says the 689599.7 rule describes the probability mass of distribution. So this rule is made for normal distribution where these percentages, so these are what? These are percentages which represent how much data falls within 1, 2 and 3 standard deviation. यानी कि कितने डेटा हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन में आते हैं वो हमें कौन बताता है दिस रूल स्टैंड्स फॉर नॉर्मल डेविएशन. Then we move to third question. Third question says that the metric that measures uncertainty gain when replacing distribution A with B is called. तो metric क्या कहलाता है जिसमें हमें uncertainty gain होती है when we are replacing distribution A with distribution B. So solution to this would be the metric that measures uncertainty is called Kullback-Leibler divergence. ठीक है, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें ए से बी के बीच में अनसर्टेनिटी गेन करवाती है. That's Kullback-Leibler divergence and it shows how much information is lost when B is used to approximate A. यानी कि कितनी information lost होती है अगर हम क्या कर रहे हैं B को यूज कर रहे हैं A को approximate करने के लिए. Then comes our question number 5 that a model that performs well on training data but fails on unseen data suffers from. ऐसा कौन सा मॉडल है जो कि ट्रेनिंग डेटा में तो अच्छा परफॉर्म करता है बट अनसीन डेटा में सफर कर जाता है. सो फिफ्थ आंसर इज रिजिड रिग्रेशन यूज L2 पेनल्टी while लेसो uses L1 पेनल्टी. ठीक है, तो सॉरी आंसर टू दिस वुड बी अ मॉडल दैट परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट फेल्स फ्रॉम ओवरफिटिंग. तो क्या किस चीज में सफर करता है वो ओवरफिटिंग में सफर करता है. This happens when model learns patterns to specific training set and cannot generalize properly. Okay, I think we have missed question number 4. So question number 4 is rigid regression uses an L dash penalty while lasso uses an L dash penalty. So answer to this would be rigid regression use an L2 penalty. वहीं पे lasso जो है वो L1 penalty use करता है. Rich shrinks coefficient smoothly while lasso can reduce some of them exactly to 0. तो रिज जो है वो श्रिंक करता है कोफिशिएंट को स्मूथली, वहीं पे lasso जो है वो रिड्यूस करता है them to exactly 0. Then moving to the sixth question, in logistic regression, coefficient are estimated using the likelihood function. तो dash likelihood function, तो which likelihood function? It's a maximum likelihood function. यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन को देखते हैं. द मेथड चूजेस पैरामीटर्स वैल्यू दैट मेक द ऑब्जर्व्ड आउटकम मोस्ट प्रोबेबल. ठीक है, then we come to seventh question. The hyperplane in SVM that maximizes distance between classes is called dash margin hyperplane. So what margin hyperplane it is? It is SVM hyperplane. ठीक है, this boundary is chosen to leave the largest possible gap between two classes. तो ये hyperplane की distance क्यों छोड़ी जाती है? To give the largest possible gap between the two classes. Then comes the next question. In clustering, K means minimizes the within cluster sum of dash. तो 8th अगर हम clustering K देख रहे हैं तो within cluster sum of squares. तो क्या बोल रहे हैं? In clustering K means minimizes the within cluster sum of squares. It tries to keep each cluster as compact as possible by reducing the square distance between points and their cluster center. Then moving to the next question. Next question says in PCA, the first principal component captures the maximum possible data dash. So in PCA, the first principal component captures the data variance. It identifies the direction in which the data set spreads out. Yeah. Then CNNs are particularly effective for dash data while RNNs are suited for dash data.
तो CNN जो है वो पर्टिकुलरली इमेज डेटा के लिए सूट होते हैं, वहीं RNN जो होते हैं वो सिक्वेंशियल डेटा के लिए सूट होते हैं। ठीक है, तो CNN कैप्चर्स द स्पेशियल पैटर्न, क्योंकि वो स्पेशियल पैटर्न इसलिए इमेज वाली डेटा पे होता है, एंड अगर सिक्वेंशियल डेटा के लिए है तो वो RNN का यूज करते हैं. इट हैंडल ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट और टाइम सीरीज. Then we come to the next question. In 10-year flow, the structure representing operation and dependency is called a computational. Computational what? It is called a computational graph. ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें क्या, डिपेंडेंसी जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज में, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल ग्राफ. This graph organizes how data flow through different operations during execution. Then comes the Hadoop fault tolerant distributed storage system is called. तो ये system क्या कहलाता है? This system is known as HDFS. It stores data across multiple machines while replication to avoid loss. Then we come to 13th question. SQL query combining rows from multiple tables based on related columns uses dash claw. So what claw does it use? It uses the claw join claw. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी को मैचिंग कॉलम्स में ज्वाइन करके कंबाइन करते हैं. Then we come to 14th question, that is the Python collection that ensures only unique element is called a. जो यूनिक एलिमेंट कॉल करता है वो क्या कहलाता है, इट कॉल्स अ सेट. ठीक है, अ सेट ऑटोमेटिकली रिमूव्स डुप्लीकेट्स एंड सपोर्ट्स क्विक मेंबरशिप चेक. Then a bootstrapping is resampling method and sample dash replacement. So it is samples with replacement. So bootstrapping is a resampling method that samples with replacement. This allows the same observation to appear more than once in creating new sample data sets. So this was part A for data science second internal, section A data clean. Now we will move to part